Namaskar, good evening, Sat Sri Akal Adab. I'm Ella Namaste. Pachori, co-founder Motherhood Club, and yes, always the chief happiness officer at Motherhood Club because that is what gave me my identity. Motherhood Club, it works on three pillars. It functions on three pillars: health, wealth, and happiness. And May is the month dedicated to mothers because we celebrate Mother's Day this coming Sunday. And Motherhood Club focuses on mothers' happiness, mothers' health, and their financial well being also. Today at Motherhood Club, under the pillar of health, we have Dr. Vijaya Mehta MD, Gynae and Obstetrics, joining us today to talk all about menopause. सभी का स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मदरहुड क्लब पर आज हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हमारे साथ में डॉक्टर विजया मेहता जो कि बड़ौदा की एक लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो हमें हमसे आज जुड़ी हैं हमारे साथ जुड़ी हैं और इनका आज पहला सेशन है एंड आई वेलकम यू डॉक्टर विजया ऑन मदरहुड क्लब थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट टू बी हियर Namaste. Thank you for calling me. It is a great pleasure to be here and part of this wonderful initiative that you people have taken. So it's my pleasure to be here. Dr. Vijaya, we would like to know a little bit about you. Yeah. What all you've been doing, how long you've been practicing, and थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए. Okay. So I mean, as you have already mentioned, I did my MD in obstetrics and gynecology. So it's been more than 30 years since I've been practicing gynecology, obstetrics and gynecology. So I'm based in Vadodara, which is a very beautiful city in Gujarat, very near Ahmedabad. And I and my husband, we run a private maternity and nursing home, which is a very small affair, around 15 bedded. And I am interested in multiple things apart from my practice, of course. I'm a voracious reader. I write poems sometimes, I write articles, and I love music, I love nature, I love traveling. So many interests apart from this. Since you are a multifaceted person, that is why the universe conspired to get us together, Dr. Vijaya. Like-minded people should always be together. And I came to know you through Dr. Harsha, a very, very beautiful human and a great friend of mine. And I'm very sure she'll be joining us, she'll be watching our live today from her clinic. Uh, Yeah. I agree. She's a wonderful human being, and I'm very yes. grateful to her for bringing us together. So, So this is how the world functions. It should be full of beautiful people with a beautiful intent of making this world a beautiful place. Dr. Vijaya, now coming back to our main motive behind bringing you here on our platform. Women health. exactly. It's a matter of concern, and women often neglect their health. Mostly एक जो टर्म होता है मेनोपॉज एनीथिंग दैट हैपेंस टू अ वुमन above the age of 40 दे से तेरा मेनोपॉज आ गया ये तो होगा ही सही लाइक छींक आ रही है जुकाम हो रहा है आईज में स्ट्रेन आ रहा है कुछ भी हो रहा है तेरा तो अभी बार बार इम्यूनिटी लो हो रही है ओहो तेरा मेनोपॉज आने वाला है तो डॉक्टर विजया फर्स्ट टेल अस व्हाट इज मेनोपॉज Exactly. Before going into that, because you said one of the pillars is health, so यस I would like to just add some of my ideas about it. It's not my idea, it is a well known idea, but people tend to forget it. So, what I would say is health is not just a physical well being, it is also a social and a mental well being. So, एब्सोल्युटली when all the three get together, then we are in good health. And again, good health doesn't mean there is a lack of illness or there are no diseases. It's not a negative term. कि ये नहीं है, so I'm healthy. It is a positive term, good या health. So that concept needs to change. Usually, what I'm telling is we are only concerned when we fall sick. Otherwise, we are not concerned about ourselves. So the यस main focus
शुड बी कि हम अपने हेल्थ पे पहले से फोकस करें सो दैट वी डोंट फॉल सिक, इंस्टेड ऑफ But तब जागते हैं जब कुछ प्रॉब्लम होता है. So that is one thing. Now coming to menopause, menopause is I think a very dreaded term, and as you said, इतना convenient है कि people around us they explain all our problems based on menopause. कुछ भी हो तो it is menopause, and not people. We also tend to do the same. We being women, we do the same. So yes, menopause actually जो होता है, it's like when you stop your menstruating, like periods खत्म हो जाते हैं for at least 1 year. एक साल तक पीरियड बंद हो जाता है, देन वी से कि नाउ मेनोपॉज आ गया है, सो यू हैव रीच्ड मेनोपॉज. बट लाइक 6 महीने नहीं आए, दैट डजंट मीन इट्स मेनोपॉज. 3 months नहीं आए, दैट डजंट मीन इट इज मेनोपॉज. सेकेंडली, मेनोपॉज यानी इट्स नॉट एन एंड. पीपल इतना दे ड्रेड द टर्म मेनोपॉज. women think अभी मेनोपॉज आ गया so my womanhood is gone. तो मैं अभी बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ. Like if I can be frank, I may not be able to satisfy my husband. So these are the concerns which goes on in a woman's mind. Though she may not share it, she may not voice it, but वो एक feeling रहता है, and then she fights against it कि नहीं, like I still want to be young. And that acceptance doesn't come. But then what I say is this is not the end. It's a renewal of a new stage. It's the beginning of a new stage. है ना? एक stage खत्म हुआ, now we are entering a new stage. yeah. So like we have different stages, as you know, puberty है, reproductive age group है, फिर perimenopause आता है, and then menopause. So menopause के बाद we go into another stage of life. So we Yes. have to look forward to it. It has its challenges. तो accept करके हमको आगे बढ़ना है. सबसे So बड़ा इशू ही एक्सेप्टेंस का है. व्हेन पीपल फाइट, व्हेन अ वुमन फाइट्स अगेंस्ट हर ओन इमोशंस एंड अबाउट दिस एक्सेप्टेंस, yes, this is a phase of life, this is going to pass. And believe me, like, I have been menopausal since the age of 46. Now I'm 56 for the last 10 years. exactly. And it was a cakewalk for me. I'm a living example. If you accept it with grace, with happiness, and if you learn how to manage yourself, जैसा अभी डॉक्टर विजया ने बोला कि फिजिकल पार्ट एक है, एक आपकी मेंटल हैप्पीनेस, और आप सोशली कितने अपने आप को एक्सेप्टेड समझते हो, कितना खुश रहते हो सोशल उसमें सराउंडिंग्स में, ये आपकी टोटल होलिस्टिक हेल्थ को बनाता है. यही सोच डॉक्टर विजया, अभी आपने बात की पेरी मेनोपॉज के बारे में. Exactly. Menopause, everybody talks about menopause, but people, women are often unaware about this term called perimenopause, and even men. We have got some men also who would be joining us or who would be watching us later. And वो That's great. हर एक को मुझे लगता है कि घर में अगर कोई लेडी है और उसके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो घर में जो मेल्स होते हैं उनको भी ये चीज समझनी चाहिए. उनको सबसे ज्यादा समझनी चाहिए. हाँ. उनको भी हाँ. नहीं, सबसे ज्यादा. हाँ. I make it a point when I face a woman with multiple emotional issues in menopause, मैं हमेशा बोलती हूँ आपके हस्बैंड को साथ लेके आओ. So of course there are many husbands who accompany their wives on their own. खुद husbands थोड़े ऐसे हैं जो आप wives को खींच के भी लाते हैं, इतने aware husbands हैं आजकल. So I am very happy to see all that changes occurring. So Yes. they are the best ones who can help, and they do help as much as they can up to their ability. ऐसा नहीं कि नहीं करते, but there are few husbands who are not aware. तो उनके लिए जरूरी होता है. बिल्कुल. तो चलिए Sorry to बात interrupt करते you. हैं पेरीमेनोपॉज के बारे में. ये क्या होता है पेरीमेनोपॉज? See, perimenopause again एक transition period है. जैसे आप reproductive age group है, and then you are going into menopause. So if I explain it in a simplified manner, what happens कि when we are born with our ovaries, तो ovaries के ना limited number of eggs होते हैं, fixed number of eggs होते हैं. As you age, वो eggs use up होते जाते हैं, and these are the eggs के आजू बाजू cells से they produce the hormones, the female hormones, है ना, estrogen, progesterone, which are important for us. तो now the cells कम होते जाते हैं, so the amount of hormones start declining. तो जो रिडक्शन होता है
hormones ka, that phase, Hmm. that is the phase of perimenopause. So this perimenopause is a transition phase, menopause or reproductive age group. So when the hormone levels start declining, वो suddenly बंद नहीं होते हैं ना, they gradually decline. जी. So hormonal imbalances भी होते हैं and levels भी कम होते हैं. So these hormones ऐसा नहीं कि they are only responsible for your periods or for your reproduction. It's not that. It affects everything, every organ right from the head to the toe. So ओके. multiple organs सब involve होते हैं. They need the presence of estrogen and progesterone. They function more efficiently in their presence. तो ये जब कम हो जाता है तो periods पे तो असर होता ही है. Side by side, everything else also gets affected. The entire system gets affected. Your metabolism पे affect होता है, सब पे affect होता है. So this transition phase usually starts from 44 years of age to 52. So some people it can go on for 10 years also, perimenopause. ओके. हाँ. So it's not like that कि आके खत्म हो गया. And menopause खत्म हो जाता है उसके बाद भी वो सब symptoms can continue for 2-3 years. यस. So it's not कि one fine day हुआ and khatam, now we are free of it. It's some people are blessed like you, so who don't have any other problems. But then this is a phase, and that goes away, but it takes its own time. For some it is long. कई लोगों को 40 years पे चालू हो जाता है, कई लोगों को 38 years पे start हो जाता है. And for some usually around 44-45 years of age it starts. मेटाबॉलिक रेट कम होने से वेट गेन स्टार्ट हो जाता है. Exactly. हाँ. So there, सो yeah. Metabolism gets affected. It's not the rate which gets affected, the entire metabolism gets affected. बिकॉज So weight gain is one thing that females are very very scared of कि it that is why बहुत सारे लोग एकता your question has been answered. At what age does menopause start and symptoms? So it can start from the age of 38. It could, and for many women like these days जैसे प्यूबर्टी का ऑनसेट जल्दी होता है उसी हिसाब से उसी रेशियो में मुझे लगता है कि या उसी जिसका करना चाहिए कि हिसाब से आपका पेरीमेनोपॉज भी जल्दी आता होगा फिर बिकॉज started. Ovarian, again, as I said, ovarian function starts yes. declining. तो फिर वो थोड़ा Because जल्दी. I know a few women who had early menopause at the age of 35, 36 also. Yeah, There are that a is few very women. early. That is Yeah. known as उसको premature ovarian follicle failure कहते हैं, POF हाँ, कहते हैं. हाँ. So that is not a normal thing. That is an abnormal thing because they might be having polycystic ovary syndrome and something else. So उसकी वजह से जल्दी हो जाता है. जल्दी हो So जाता है. yeah. So So coming now to the you symptoms. what are the symptoms? Yes. Yeah. See, the Yeah. one of the most important तो नहीं कहते हैं पर symptom जिसके लिए people usually consult as doctors is regarding the periods, menstrual periods. So irregularity in the menstrual periods, that is one of the symptoms. So irregularity can be either way. Either आता ही नहीं है 2-3 महीने तक it doesn't come, and then once it comes, it's like continuously आता है, very heavy flow, very painful, passing clots. It's only at that time they come and consult us, or else it comes more frequently. Initially it's a 28-day cycle, then becomes 26, 24, like that, and then 15 days it keeps on coming, and more number of days, sometimes intermittent bleeding आ जाता है कभी भी. So that is what is the main problem. One matter of concern here ये है कि लोग usually ऐसे सब होता है तो दे से नहीं, ये तो मेनोपॉजल है, घर के बड़े लोग भी बताते हैं नहीं ऐसा तो होगा बेटा, so you don't worry. So people don't consult doctors unless it becomes too late. What I would like to emphasize here is menopause is a diagnosis by exclusion. Perimenopause, menopause ऐसे diagnose नहीं कर सकते हैं. Because ये जो symptoms होते हैं, they can come in many other diseases also. Yes. है ना? तो वो diseases are very scary, they are very morbid. तो वो diseases को पहले exclude करना जरूरी है. So once you exclude the diseases, then we can say कि okay अभी और कुछ नहीं है, so we just treat with other medicines and you'll be okay.
because I have seen cases where menopausal hai karke baithe rehte hain, and then they come with a very huge fibroid inside which has got infected, necrosed. There may be secondary cancerous changes, or else there can be carcinoma of endometrium. So there are so many changes, and these can be, if detected in earlier stage, the treatment also becomes very simple, easy. Yes. जैसे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, हमको पहले ही डिटेक्ट कर लिया, जो उसको हम CIN कहते हैं कि इन सीटू पे है, देन वी जस्ट हैव टू रिमूव द यूट्रस एंड द ओवरीज एंड द ट्यूब्स. कुछ कीमोथेरेपी नहीं होता है, कुछ रेडिएशन नहीं होता है. सो लाइक द ट्रीटमेंट can be easy and complete at that stage. So whenever you face any menstrual problems in these age group, please consult your doctor. Don't just wait कि नहीं वो चला जाएगा चला जाएगा. Usually people come and consult after a year of these problems. Once Yes. they get tired, अभी थक गई, अभी बहुत weak हो गई, then they come and consult. So that is one thing that I would like to emphasize कि please don't do that. We personally know of a few cases, like very good friends or relatives or ours, where these women went ahead and कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, वो तो हमको मेरी सास ने बोला कि तेरा मेनोपॉज है, but as you rightly said, ultimately it turned into cancer of uterus or endometrial carcinoma, and they are struggling with their health, in and out of the hospitals and chemo and this and that. तो प्लीज प्लीज ये सबसे अपील है कि अगर आपको कहीं से भी, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड्स बहुत हैवी हो रहे हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं आपको पीरियड्स के साथ में, तो पहले अपना गायनिक चेकअप जरूर कराएं और उसको एक्सक्लूड करें, उसको रूल आउट करें पहले कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है. सिर्फ मेनोपॉज के नाम से उसको नेचुरली या नॉर्मली आपको ट्रीट नहीं करना है. बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट योर ओन हेल्थ वुमेन. जी Very डॉक्टर. true. या. So, as you said, that is the problem that we usually face. Second symptom जो usually people लेके आते हैं is about, as you mentioned, weight issues. So main Yes. concern होता है कि मैं खाना तो कम खाती हूँ, उतना ही exercise कर रही हूँ, but I'm still putting on weight. And this weight is usually, central weight होता है. So tummy पे जाता है, or your bust line increases, your hips increases. So this is, as I said, it's all because of change in the metabolism that occurs. So like in men who have heart diseases and all, we say lifestyle changes करना है. वैसे here also we'll talk about that. Lifestyle changes goes a long way in helping with all this. The third important thing is regarding your mental status. Yes. So this is, according to me, this is the most important change that is seen in a woman. And a woman could, परेशान होती है कि I don't know why I become like this. I was not like this before. And people around her तो होते ही हैं. And along with that, एक guilt भी add हो जाता है कि अरे मैंने ऐसे किया, I should not have done this. So all that creates lot of complex problems. So lot of mood swings रहते हैं. Either एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, and then sometimes they become very aggressive. Irritability हो जाता है, जैसे छोटी छोटी चीजें which like we used to ignore before, suddenly it becomes like a very big issue. तो राई का, like you make a mountain out of a molehill जैसे जैसे हो जाता है. And once that phase passes, they themselves realize that why I did it. So these are the sentences that patients come and tell me, that but they feel that they are not in control. So when it happens, they cannot control themselves. ऐसे blurt out हो जाते हैं. Then they feel एक low energy feeling रहती है. They feel they are totally weak. They are not interested in anything. That enthusiasm, zest for life नहीं रहता है. And anxiety attacks. Anxiety attacks are really, really very, very problematic in the sense कि they mimic a heart attack. So ऐसे cases होते हैं कि people have got admitted in heart centers and even angiographies have been scheduled, thinking that there is something which is not being picked up by the routine investigations. Yeah. So and sudden hypertension होता है, sudden rise in blood pressure, that is very high, जो एकदम severe hypertension कहते हैं, वो range पे चला जाता है. So that is also a problem that people
present with. Another issue is regarding uh, repeated urinary tract infections. Okay. So that is one problem that is usually seen perimenopausal and menopausal. So towards the end of the perimenopause and menopause. So रिपीटेडली रहता है, एक अर्जेंसी रहती है, कंट्रोल ओवर यूरिन कम हो जाता है. सो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो कहते हैं, दैट आल्सो स्टार्ट्स because the muscles become loose over there, sphincters become loose. So whenever the pressure increases, like you cough or something, there might be a leakage of urine. So we call that as a stress incontinence. Infection इसलिए बढ़ता है because again lack of hormones, lack of estrogen. So जो urinary tract होता है, the lower part is very sensitive to estrogen. So estrogen level कम हो जाता है, so that जो cells वहाँ होते हैं, they become susceptible to infection. So Okay. estrogen was helping them guarding against that infection. So that is again a reason for repeated infections. Vaginal dryness रहता है. So the libido है, sexual desire reduces, sex becomes painful. So then again there's a tussle between the husband and the wife. So wife avoids, husband wants it. So all those issues they crop up. Apart from this, it also affects your muscles and muscle pain, bone pain, joint pain. Again, calcium bone में से कम होता जाता है. लीच आउट हो So जाता the, है. so demineralization, osteoporosis type of problem starts. So those problems also start occurring. And another thing is, especially in very highly qualified professionals and all, cognitive function में थोड़ा impairment आ जाता है. Memory ओके. में थोड़ा difference होता है. What they used to be before, like it's a very minor difference. Major, most of them might not notice, but those who are in very high functioning intellectual capacity types, उन लोग में they can make out the difference. Sleep disorders. Sleep is also a very big problem in perimenopause and menopause. So either initiation में problem होता है, otherwise बीच में they get up, what hot flushes होते हैं, night sweats होते हैं. So even if they are sleeping in AC in a cold environment, suddenly they start sweating, पूरे drenched up. Okay, so the sleep gets disturbed, and then going back to sleep becomes difficult. उसकी वजह से again their mood gets affected, their alertness gets affected the next day. So या. that irritability ho jati hai. So all that also starts. So you name it, all symptoms hai. So entire body gets affected, as I said. I've But heard that there are close to 30 symptoms of perimenopause. kuch bhi tum bola, like now more and more are getting discovered. So now what we have realized is gut, जो अपना digestive system है, that also gets badly affected. हाँ, So like just in my case also, I experienced lots of flatulence हाँ, in those days. So mine was flatulence and hot flushes and a little bit of irritability. These were the three main symptoms which I suffered from, but I got good medical help and I could take care of myself. So essentially, एक question और आया है अभी. Many times the irregularities in period can be due to, is it due to some interference of medication, ongoing medication, or sometimes somebody is traveling too much, or somebody is under some sort of mental stress. क्या इसके लिए भी periods के अंदर irregularity आती है? definitely आती है. हम्म. See, the hormones are affected not only by the routine जो अंदर mechanism चल रहा है, it is also Yes. affected by the environment, outside environment. So जैसे cold है, cold country से तुम hot country में चले गए, like change in that environment. हम्म. And stress, social environment में any change हुआ है. So stress is one of the most important factor, I think, for all diseases now. So this Yes. is the most important cause. और इसमें तो hormones में तो it is known, stress does affect the hormonal imbalance. Like it is seen at any age.
Why perimenopausal at any age? We have examples of young girls who are stressed out about their exams, missing out their periods just because Yes. exams are there. So, excuse me. Do So you have that water with time, you? Would yeah, you like to have a glass of water? Yeah, have a sip of it. excuse Yeah. me, excuse तो जितने भी लेडीज अभी देख रही हैं, आपको पता पड़ा कितने सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपके मूड स्विंग्स, जल्दी-जल्दी गुस्सा आना, जल्दी से किसी भी बात पे चिढ़ जाना, एकदम से ड्रॉप ऑफ द हैट आप रोने लग जाते हो। आपको पता ही नहीं पड़ता आपको रोना क्यों आ रहा है, कोई रीज़न नहीं है रोने का लेकिन आँसू गिरते चले जाते हैं और आपके साथ में आपकी फैमिली भी अफ़ेक्ट होती है बिकॉज़ पूरे घर का एनवायरनमेंट स्ट्रेस से भर जाता है। तो इन सिम्पटम्स को पहचानने की कोशिश कीजिए, ट्राई आइडेंटिफाइंग दीज़ सिम्पटम्स एंड ट्राई टेकिंग केयर ऑफ दीज़ सिम्पटम्स बाय विजिटिंग अ गायनेकोलॉजिस्ट। वो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक सही आपको एडवाइस देने के लिए सिर्फ़ एक एक्सपर्ट ही मिलना चाहिए। तेरा मेरा नोट्स कंपेयर करके 2 फ्रेंड्स टॉकिंग टू ईच अदर, अच्छा तुझ मुझे होता है, तुझे भी होता है, अच्छा फिर ठीक है। नहीं, बिकॉज़ हम सबकी भाषा शरीर की अलग है। वी हैव डिफरेंट एंड आवर बॉडी इज़ अ वेरी, वेरी इंटेलिजेंट थिंग बिकॉज़ वो हमें सिग्नल्स देती है। इट टॉक्स टू अस। me. Agreed, agreed. इज़न्ट इट डॉक्टर? Agreed, agreed. It does talk to us, and as you said, we women have a tendency which we don't see in men, and unfortunately, that is my bone of contention with all women, even in pregnancy and all. या, फ्रेंड की प्रेगनेंसी के साथ कंपेयर करेंगे. एक फ्रेंड ने अपनी प्रेगनेंसी में हुआ, दे सडनली बिकम एक्सपर्ट्स बिकॉज दे हैव डिलीवर्ड वन चाइल्ड. इट्स नॉट लाइक दैट. So either they mislead them, either they stress them out more than needed, or else the other way around, they neglect themselves. यस, So that problem is, I think, it's part of our mental makeup because we tend to share everything with our women friends. So ये problem रहता है. Here again, as you said, why we have to consult a gynec is again, जैसे मैंने बताया था, hormones जो थे, तो till that age of 40 or so, you would have heard of very few women who are having blood pressure or any heart problems because these hormones were exerting a protective effect. तो अभी उसका protective effect चला गया. So after 40, again, you're more prone to all these diseases. जो men में 35 से हो रहा था, that again after 40-45 we become, our risk becomes as same as a men's risk for developing a heart disease or developing hypertension and other like cholesterol बढ़ गया है, all those things, obesity, वो सभी after 45 all this risk becomes more. So if you consult a doctor gynec के लिए भी and for routine in checkup, so that is very beneficial. Excuse me. या. So we have also another question. When to visit a gynae if you feel that perimenopause has started? अगर किसी को लग रहा है कि मुझे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सपोजिंग किसी को पीरियड्स में इरेगुलरिटी स्टार्ट हो गई है, okay, in her 40s, in her early 40s or late 30s, if somebody has started getting delayed periods, maybe 15 days, 10 days की overdue जा रहे हैं, तो should she visit a gynec then and there only? See, as I said, one cycle or two cycle can be because of other reasons, External like emotional factors. stress Yeah. हो गया, कुछ हो गया in those days, or you're overworked or something like that. So if it persists for 3 to 4 cycles, then you should go and consult. Okay. Secondly, what I would emphasize is after the age of 40, even if you have no problems, please consult a gynecologist and get an annual scan done. एक सोनोग्राफी करानी जरूरी है बिकॉज यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ब्लीडिंग होके ब्लीडिंग में चेंजेस होते हैं, सो हमको वार्निंग देता है कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, सो यू गो एंड कंसल्ट. बट ओवरीज दे डोंट वार्न यू एट ऑल. Yeah. ओवरीज इतने छोटे होते हैं
and their symptoms are very vague. जैसे आपने बताया जैसे फ्लैक्चुलेंस होता है कोई लोगों को, और एसिडिटी हो जाती है, वेरी वेग सिम्टम्स जो 100 रीजंस के लिए हो सकता है, हम्म। एंड दे आर सो स्मॉल कि इतने बड़े हो जाएं देन एंड देन डिटेक्ट होता है. सो जस्ट फॉर द केस ऑफ ओवेरियन lesions like ovarian cancers, ovarian cysts and all that, एक annual sonography होता है तो this thing can be covered. Secondly, thyroid is also very common in this age group whenever Yeah. woman goes into perimenopause. So blood investigations, as I said, for your cholesterol levels, for your diabetes, for renal functions, your lipid, वो सभी every annually कराते रहना जरूरी है. And let us not forget breasts. Breast Yes. self-examination is very important. So you should never neglect it. Every 15 days, every woman should stand in front of her bathroom mirror and examine herself properly and thoroughly, and get a mammography done at least every 3 years if there is no family history of breast cancer. If there's a family history, then she has to get it done at least every year. Every year. Okay. हर 3 साल में एक बार मैमोग्राफी करानी है. अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है, घर में किसी मदर, मासी, बुआ, किसी को भी अगर कैंसर पहले डिटेक्ट हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर, तो साल में एक बार अपनी मैमोग्राफी करानी बहुत ज़रूरी है. ये डॉक्टर विजय का कहना है. इसके अलावा साल में एक बार अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, जिससे कि पता रहे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो गई है. बिकॉज़ यही वाली बात है कि हम इंग्लिश में जैसा बोलते हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. सो Very एक बार true. अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, तो आपको बाद में मल्टीपल चक्कर्स नहीं काटने पड़ेंगे डॉक्टर के पास में. We Very have true. another, yeah. So we have another question. If someone gets high BP during perimenopause, she should she go on BP medicine, or should she wait till the phase gets over? Now, like I think किस कब तक चलेगा वो phase किसे पता है, तो medication पे तो जाना पड़ेगा after proper investigations. I think you See, are the expert. Yeah. yeah, yeah. मेडिसिन में जाना है कि नहीं जाना है, that the doctor will decide, right? So usually doctors don't start off with medication just on single reading. Hmm. They take a serial reading लेते हैं over a period of a week and देखते हैं. Sometimes, as she said, sometimes what happens is जैसे PMS कहते हैं, premenstrual syndrome. Some Yes. people just before the period start, their blood pressure shoots up, and then period का आ जाता है, then it becomes normal. तो ऐसे सब वेरिएशंस रहते हैं. सो यूजुअली अ गुड फिजिशियन देखते हैं, दे कीप अ चार्ट एंड देन दे पुट यू ऑन मेडिकेशन इफ रिक्वायर्ड. एक अनदर इतना रॉन्ग मिसगिविंग है लोगों के माइंड में कि कोई मेडिसिन स्टार्ट किया यानी खत्म, यू आर लाइफ लॉन्ग, यू आर ऑन इट एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन इट. But the thing they forget is if you don't take the medicine, we don't know how many days you're going to live. You're worried about, whether you'll become addicted to it. It's not an addiction. Blood pressure, if it remains uncontrolled, it causes lot of catastrophes. एक stroke आ जाता है, bleeding कहीं पे हो जाता है, heart attack हो जाता है. Then what can you do about it? So blood pressure should not be taken lightly. बीट इवन इवन ग्लूकोज लेवल्स भी तो मेनोपॉजल वुमेन में बढ़ी जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं. डायबिटीज भी स्टेप इन कर जाती है. Now, that is again, as I said, metabolic. So again, यस. in that, if weight is controlled. So as I said, menopause, perimenopause में adjuvant treatments का बहुत major role है, rather than the medical treatment. या. So adjuvant treatments are what would do for any lifestyle disease. So one is most important is physical exercise. So as a part of your routine, some form of physical exercise of 40 minutes per day when you're on your own. And please, at this time, don't go with your family or don't go with your husband. Give some time to yourself. Be on your own and do this. So इससे एक तो मूड स्विंग्स में तो बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज एवरीवन नोज डोपामिन गेट्स रिलीज इन द ब्रेन. एक फील गुड फैक्टर रहता है तुम्हारे लिए.
And secondly, your problems with your weight gain, metabolic issues, your blood pressure, your glucose जो derange हो गया है, all those will get into control. So physical exercise is one of the most important things जो हमको करना है. Second thing is some form of mind stabilizing exercises like meditation कर रहे हो या mindfulness exercise, whatever suits you, that you have to do. Because again, as I said, this is a period. We don't know how long it can go on. We don't know how short it is. तो जैसे एक नई चीज के लिए हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, so for this phase we have to do all these things so that Yes. we go through this phase properly. And third thing is एक तुम्हारे creative self के लिए एक give some access to it, give some room to it, है ना, जो भी तुमको अच्छा लगे, something different from what you have been routinely doing, जो आपको करना था बचपन में but you didn't have time for it, or however good or bad you are, जरूरी नहीं है कि you have to be very good or best, but just for yourself give some time daily for this. So these three are very important adjuvant treatments. I mean, I usually इस पे बहुत फोकस करती हूँ कि ये बहुत ही important है. And what you are doing, something like that, you're interacting with people of your own, someone very like you, like-minded people. So Yes. make a group of like-minded people, interact with them, communicate with them. So get out of your own Routine. जो रूटीन है उसमें से बाहर निकल के करो. बिकॉज सी वन अनफॉर्चुनेट थिंग इज ये स्टेज ऐसा है कि इट कोइंसाइड्स with the stage when your children have grown up, become independent, they are ready to fly the nest, right? So suddenly you feel as if you're not wanted anymore. So people who are dependent on you now are no longer dependent. तो तुमको एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी रह जाती है because the whole life was revolving around them, and suddenly they don't need you as much as they used to before because now they are exploring, they are flying out on their own. So you have to have a new group of your own to interact with and find something new horizons there. So Absolutely. these are very important. Second thing what I would say is HRT के बारे में just in a brief कि HRT के इट इज ऐसा नहीं कि इट इज वेरी बैड बिकॉज इसको बहुत बदनाम किया हुआ है कि बहुत उसके साइड इफेक्ट्स हैं एंड ऑल दैट है. बट recent studies have shown कि if it is used, HRT is useful when it is used when in women less than 60 years of age. Okay. या 10 years menopause तक it is advice. उसके बाद if you continue doing it, तो उसके side effects are more problematic because it has been known to cause heart ailments, breast cancer के भी risk बढ़ जाते हैं, and those thromboembolic phenomena हो जाता है, like strokes हो जाते हैं, DVTs हो जाते हैं. So those complications are known to occur. HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. Exact, yeah, जहाँ yeah. पर Hormone आपके dependent. अपने हार्मोन्स उस क्वांटिटी में नहीं बन रहे हैं, उस वजह से आपको दिक्कतें अगर ज्यादा हैं, हाँ, अगर आपको ज्यादा है. पेरिमेनोपॉजल सिम्टम्स जो हैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं, उस केस में डॉक्टर्स हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट को रिकमेंड करते हैं. एंड मेजरली बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि HRT है ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे हाँ, इसके कैंसर हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बहुत है. हाँ, इससे वो हो जाएगा. बट यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर बिकॉज आपका डॉक्टर जानता है कितना देना है, कब तक देना है. see usually what we do is, as a some severe patients with severe emotional issues, some people या. become even suicidal because of this. यस. So suicidal भी होते हैं, homicidal भी बन जाते हैं. But again, any women with any emotional problems in that age group, you can't just say कि they are menopausal. They can have some psychiatric issues also. तो उसको भी rule out करना जरूरी है. So such patients only many times a gynec alone cannot treat. We have to get consultation with the psychiatrist and then treat the patient accordingly. Similarly, जैसे मैंने आपको बताया कि urinary tract infection repeatedly होता है. Some people have vaginal issues like vaginal dryness इतना हो जाता है and infection repeatedly होता रहता है वहाँ पे. So sometimes you have to give them local hormones.
So in Okay. a form of ointment or something, so which वहाँ पे work करता है, and that works really well. So it's very protective and it doesn't have any side effects, so which we dread of the oral hormones. So Yes. that has a definite role in perimenopausal and menopausal. And other things that we have to take care of is nutrition. So nutrition mein again, what we have seen is, uh, I think it's not only perimenopausal. After a particular age, even men face the same issues of vitamin B12, vitamin D3 deficiencies. We do face calcium deficiency also. So these three supplements have to be taken on a regular basis. Calcium supplementation is very much important. See, nowadays again there is a fad that we'll go for dietary calcium, but the requirement itna strong, heavy hai that we cannot get it from a dietary calcium. So we have to take supplements. Again, supplements you don't have to take it daily. Around 10 days in a month, that is enough. Similarly, B12 का भी एक अलग dose होता है, D3 is also. But these three are very important because they again affect the entire body metabolism, right from head to toe. सो यू कैन एक्चुअली शेड्यूल योर कैल्शियम फॉर 10 days. उसके बाद में आपने मल्टीविट्स भी ले सकते हो, उसके अलावा B12 ले सकते हो 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए. इस तरह से Yeah, अगर yeah, हम आपको पूरे मंथ को 8-8 10-10 दिन में 3-4 मेडिसिन सप्लीमेंट्स के लिए वो कर दें, तो आपको भी याद रहेगा खाने के लिए, और आपके सारे लेवल्स जो होंगे वो मेंटेन्ड होंगे. कैल्शियम yeah, लेवल्स हुए, B12 लेवल्स हुए, exactly. D3 लेवल्स हुए. तो अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस बारे में. Let us be a little bit selfish about us now. It's time to be Yeah. a little selfish. What do you think, doctor? I don't think I read somewhere thinking of oneself is not selfish, but expecting others to think of you, that is selfish. That is selfish. Yes. तो सेल्फ So लव दिखाने का जो समय है ना, वो अब आया है कि जहां आपने 35-36 ईयर्स की एज क्रॉस कर ली, जैसे जैसे आप अपनी एज में एडवांस हो रहे हैं, प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ. बी इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. अगर किताबें पढ़ना पसंद है तो बुक रीडर्स क्लब में, आप बुक क्लब में को ज्वाइन कर सकते हैं. अभी तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यू हैव गॉट सो मच ऑफ एक्सपोजर, आपको बहुत अच्छे से मिलता है. राइटर्स को जो एक्सपोजर मिल रहा है आजकल, पेंटर्स को. इन माई मेनोपॉजल लाइक पेरी मेनोपॉजल डेज, वेन एवर आई यूज टू फील a little pull down, I used to start doodling. मेरी डायरी में किसी से भी बात करते करते भी, फोन पे बात करते करते भी, मैं उसमें सिर्फ कुछ 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 ऐसे कुछ डूडलिंग करती रहती थी, और वो मेरे को एकदम से काम डाउन कर देता था. तो ये हमें खुद ही आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज से वी आर फीलिंग बेटर. शुभ्रा का क्वेश्चन है, मैम क्या इसमें योगा भी एक्सरसाइज? बिल्कुल, योगा तो बहुत ही अमेजिंग होता है फॉर योर माइंड एंड बॉडी. yeah, सब. yoga is very good, but at the यस. same time, what I would advise is do some kind of a cardio यस. along with yoga. Cardio is a उसका भी एक अलग advantage है. See, you go out in the nature, यस. है ना. उस टाइम में सब भूल जाओ आप. You look around, see the nature, look at the trees, smell the flowers. So all those things also have a very big impact on. Yoga has its role definitely. ऐसा नहीं कि नहीं है. Yoga, meditation, they all have a role. But some form of a स्ट्रेनस physical एक्सरसाइज. exercise, हाँ, थोड़ा एक speed तुम करते हो ना, that also brings back that enthusiasm life में. नहीं तो you're totally, yoga calms you down definitely, पर एक फुर्ती यस. के लिए भी, एक high मिलने के लिए भी that really helps. Absolutely, absolutely. You So can even many women play are something. thanking you today. Like बहुत अच्छा, you've been getting beautiful compliments and comments here Oh for yeah. the information you've been sharing. Yes, आप कुछ बोल रहे थे. Sorry. हाँ. Dance is also the very good form of exercise. So if you are into dancing, that is the best way I can feel because एक high भी आता है, एक enjoy, you get a smile on your face while dancing. So that is also a good form of exercise. You can play anything, any games. Yes. So it's Yes. time to gear up. By
doing more mind exercises, physical exercises, being in the right company, getting in touch with the gynecologist. Now is the time. Do not ignore your symptoms at all. And Ekta Segals, our founder, she's saying, Dr. Vijaya, you have explained this so very nicely. We are so grateful to you. And okay, now we have a question. किरण जी, यू हैव जॉइंड अ लिटिल लेट, आप इसको दोबारा देखिएगा। पेरी मेनोपॉज के बारे में पूछ रहे हैं। मेनोपॉज से ठीक पहले जो टाइम आता है, पीरियड्स खत्म होने से पहले वाला जो टाइम आता है, उसको पेरी मेनोपॉज कहते हैं। और शुभ्रा बोल रही हैं, आज बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच शुभ्रा फॉर योर इनपुट्स हियर। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आज पुटअप किए हैं। और आज आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी जो फैमिली में मेन हैं, चाहे बेटे हों, चाहे भाई हों, चाहे हस्बैंड्स हों या फादर्स हों, उनके लिए? See, most of the complaints that the husbands usually have is they complain that her nature has changed. She never used to do this. Now she's doing that. So what I tell them is, all these years she has been adjusting to you. So now it is your turn. You have to adjust to her. Bear with her. So and uh, see, it's their reaction to what a woman does that makes one feel guilty. So Yes. guilt factor is in their hands. So if they don't react and if they show some understanding, that guilt factor से जो complexity होती है, all those emotions में, that goes away. So that is one thing. They have to be there for them. They have to be understanding and they have to be supportive. So एक अभी while talking to you, a thought crossed my mind is that when a woman is in a perimenopausal phase, like in her 40s, her kids are in the adolescent age. Again, a very volatile, emotionally a very very volatile phase for kids. That is why these fireworks, they are magnanimous. जो घर में रोजाना जो चिक चिक झगड़े या जो शोडाउन्स होते हैं, वो इसलिए भी बहुत होते हैं क्योंकि जो यंग बच्चे हैं, यंग अडल्ट हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनके अंदर भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस चल रहे होते हैं, और वही टाइम पे उनकी मदर को मेनोपॉज की वजह से उनका भी इमोशनली वो लोग बहुत हिले हुए होते हैं, और वहीं पे वो झगड़े जो होते हैं, जो कभी नहीं हुए थे, जिन बच्चों ने माँ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, या जिस माँ ने अपने बच्चों को कभी डांटा नहीं था, ये झगड़े अब स्टार्ट होते हैं। तो very true. इसमें बहुत, अगर हम सेंसिबिलिटी के साथ काम लें दोनों ही पार्टीज, एंड यहाँ पर वर्क होता है फादर का, a father who has to sit his kids down and tell their kids about what to expect in this coming period from their mother, and I agree. also try to put some sense in the mother's mind also, because यहाँ पर वो जो आदमी होता है ना, वो ही पिसता है बच्चों और बीवी के बीच में। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है एक मैन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, टू क्रिएट अ बैलेंस, टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड टू मेक देम सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच अदर्स। Exactly. See, this is the ideal situation, इला जो आप बता रही थी। आज जी, ही मैं सोच रही थी कि see, हमारा हमेशा एक्सपेक्टेशन ही रहता है कि they should do that, husband should do that. Why? Let us take charge of our own things. Why do you यस, want them to do something? अभी you are aware कि अभी ये सब प्रॉब्लम हो रहा है. So right from 40 years of age, you chalk out some time for yourself where you devote time for these things, as I mentioned. यस, So which is the mainstay of the treatment, है ना? तो जैसे प्रिवेंशन जो बोल रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम तभी से स्टार्ट कर दो। इतना नहीं कर सकोगे टाइम कंस्ट्रेंट से, तो सम क्रिएटिव आउटलेट एटलीस्ट 2 or 3 times a week, ट्वाइस अ वीक, तो एक आउटलेट तुमको मिल जाता है। सो दैट रियली हेल्प्स। See, if you are fortunate, if you have a very understanding, sensitive husband, he'll be able to do all that you mentioned. But there are यस, some men who don't understand at all. So they don't have the ability to do it. ऐसा नहीं कि they don't want to do it. यस, हाँ, बिकॉज मेंटल कंडीशनिंग नहीं होती है ना उस हाँ, तरीके की। नहीं होती है। हाँ, वो So then नहीं, that is उसको not possible. समझ ही नहीं पाते हैं, दे आर नॉट एबल Yeah. टू आइडेंटिफाई एक्चुअली। Yeah. हाँ, And
So then it's expecting too much from them. ऐसा हो जाता है. So Yes. instead of that, and I feel कि जो next generation आते हैं, they won't face so much of problems that we are facing. Because वो लोग अभी से they are giving time for themselves, they are keeping themselves in the center first. ऐसे नहीं कि they are selfish, but they have found a proper way. That is what I feel. कि they are responsible for themselves. You Yes. know. हाँ. See, because you know So what, for, they are taking care of their fitness from very early years now. yeah, Hitting the yeah. gym, going for walks, belonging, like being part of music groups or reading groups. अभी हाँ सब जो लोग उनको अच्छा अपनी लगता है. क्रिएटिव पैशंस और हॉबीज को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं. हमारे Exactly. जनरेशन तक ये था कि सब कुछ भूल के अपने जो नौकरी वाले भी या जो प्रोफेशनल्स भी थे, वो भी या तो प्रोफेशन और घर Right. बच्चे, एंड वी पुट आवरसेल्व्स ऑन द बैक बर्नर. सो इट इज नेवर टू लेट टू डिस्कवर योरसेल्फ एंड टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर. और Exactly. आप खुद को अपने बारे में जितना अवेयर करेंगे, जितना खुद को अपने बारे में एजुकेट करेंगे, आपकी बॉडी आपको कुछ बातें बताएगी, सिग्नल्स देगी, उनको हमें रिकॉग्नाइज करना है. और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एडजुवेंट मीन्स जो होते हैं ट्रीटमेंट, तीन तरीके से, कि जहां आप खुद को खुश रखने के लिए कोई क्रिएटिव पैशन आप अपना फॉलो कर सकते हैं. आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, आप माइंड एक्सरसाइज कीजिए, अपने माइंड को भी एक्सरसाइज दीजिए. तो ये तीन तरीकों से ऑटोमेटिकली ही आप अपने आप को इतना एनेबल कर लेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा गायनिक हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन ऑल सेड एंड डन, a visit to your Yeah. gynecologist at least once a year is of utmost importance. So, with folded hands, I appeal each of you who is watching us now and who will be watching us later. पहली चीज तो प्लीज आज के लाइव को शेयर कीजिए अपने टाइमलाइंस पे और उन ग्रुप्स पे जहाँ पे शेयरिंग अलाउड है. बिकॉज जो आज हमें जानकारी मिली है गूगल पे बहुत है, लेकिन हाउ nicely, sensitively, and very sweetly, Dr. Vijaya has put across all the information in front of us. So, on behalf of Motherhood Club, Dr. Vijaya, I thank you so much from the bottom of my heart. और आज सारे ही लोग बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला. So it's not only about menopause. As a human, you have a right to your own happiness, and a happy soul resides in a happy body. तो पहले बॉडी का भी ध्यान रखिए और सोल का भी ध्यान रखिए, ताकि ये दुनिया जो है मदरहुड क्लब जिस उससे आगे बढ़ रहा है, कि आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है. Very true. आप चाहते हैं सोशल वर्क करना, आप फील्ड में नहीं जा पा रहे, लेकिन आप ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बन सकते हैं जहां पर आप इनडायरेक्टली भी सोशल वर्क कर सकते हैं. आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और अभी जो आपके पास खाली समय हो गया है उसको भरिए. जितना आप बिजी रखेंगे खुद को, उतना ही आप खुश रह पाएंगे, और आप इस, जिसे कहना चाहिए, भंवर में नहीं फंसेंगे, इस वर्लपूल में नहीं फंसेंगे इमोशंस के. So thank you, Dr. Vijaya. Last message for our audience today from you. Last message. Again, my only emphasis is please go for regular checkups. Don't think कि डॉक्टर के पास जाएंगे यानी कुछ गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा. Don't go with that fear. Go for a regular annual checkup. Don't neglect any warning signs you get. As you said, body हमको warn करता है. Please heed to those warning signs. And remember, prevention or early detection, that is the best way of dealing with any disease. So Yes. nowadays all diseases can be treated to some extent, but the earlier you detect them, the better is the outcome. So please don't neglect yourself. Take care of yourself, and please place yourself first. So as Ila rightly said, if a mother is happy in a family, the rest of the family is going to be happy. So please look towards your happiness first, and then look towards the happiness of others. Thank So you. we will Thank you. be bringing Dr. Vijaya back with us 25th
मई को हम डॉक्टर विजया को वापस आप सबके सामने लेकर आएंगे। आप में से किसी को भी अगर किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर डॉक्टर विजया से बात कोई सुननी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज फील फ्री टू सेंड योर क्वेश्चंस अक्रॉस टू मी and we will bring back Dr. Vijaya on our platform on 25th May. So join us again and जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा फॉर्मूला है ईच वन खींच वन। हर लेडी अगर एक दूसरी लेडी को खींच कर लाएगी और पुल अप करेगी, तो डेफिनेटली ये दुनिया ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बिकॉज जितनी स्ट्रांग वुमेन एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगी, वी आर श्योर टू अचीव व्हाट वी हैव बीन वांटिंग टू। Exactly. So Very true. thank you so much, Dr. Vijaya, for joining us today. It was an amazing session. आपने टाइम निकाला और इतनी, जिसे कहते हैं ना, बहुत सिंपली आपने आज की बातें समझाई है, ऐसा कि कोई भी आता जाता इंसान जो बहुत एजुकेटेड नहीं है उसको भी ये बात समझ आ जाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू हाउ यू पुट योर information or knowledge across. You made it so simple for everyone. So, on behalf of everyone, once again, I thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Thank you, everyone. everyone. Take care. सबके सब अपना बहुत ध्यान रखिए, और जितने भी मदरहुड क्लब की एक्टिविटीज है उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर अनएंडिंग एसोसिएशन। ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।